anybody can practice SUNYA. You'll change your life, you'll change your business, you'll change your future. So we practice non-differentiation. Whether you are Hindu, whether you are Muslim, whether you are Christian, you're Buddhist, it doesn't matter. अब यहाँ आए हो तो मन को समझ के और उसको ट्रेन करके जरूर जाना. So we train the mind by reverse counting. Which country practice the SUNYA first? It's India. दुख और सुख दोनों अपने ही बच्चे दोनों को संभालना, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है. Good morning, DX in India. Good morning, DX worldwide. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो शून्य सागा के सेकेंड एपिसोड में. DX में काफी तरह के शोज है, कुछ बिजनेस के लिए है, कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए है, पर हमारा ये शो एक नए अंदाज के साथ है. What we do through Shunya Saga is to convey to our people the stories of successful people through constant Shunya practices. बचपन की कई प्यारी यादों में एक दादी माँ की कहानियां होती है जो सुनने में काफी मजेदार लगती है, पर साथ ही साथ हमें एक नई शिक्षा यानी एक मॉरल भी देके जाती है. तो यही सोच के साथ चलते हैं हमारे आज के स्पेशल एपिसोड की तरफ. Exactly, Fahila, you are right. So let us start today's show and stay tuned for there is a very special surprise awaits you at the end of this program. जी प्रदीप सर, बिल्कुल. तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज की हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट को वेलकम करते हैं. ये आज की हमारी जो गेस्ट है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, स्पेशली मेरे लिए क्योंकि वो मेरी पर्सनल फेवरेट है और ऑल्सो फॉर दैट रीजन कि वो मेरे लिए मेरी टीचर फिगर जैसी है. A young lady who is able to work very precisely and very with great enthusiasm in any area that the company offers. Other than that, she's a macrotherapist and the person in charge of our DXN Eco Resort at Boulder Valley. Also, she's a Shunya practitioner and trainer. वो मलेशिया से है और DXN इको रिजॉर्ट जो कि बोल्डर वैली में है वहाँ की पर्सनल चीफ मैनेजर एंड इंचार्ज है. उसी के साथ साथ ये डॉक्टर लिम की स्टूडेंट है, असिस्टेंट है और कॉन्फिडेंट भी है. हमारे आज की गेस्ट एक ट्रेंड मैक्रोथेरेपिस्ट है, एक मसाज थेरेपिस्ट है और एक एक्यूपंक्चरिस्ट भी है. बोल्डर वैली में जितने भी गेस्ट यानी मेहमान आते हैं ये उनके साथ शून्य प्रैक्टिस करती है, उन्हें फोकस ट्रेनिंग और डिटैचमेंट के बारे में सिखाती है और साथ ही साथ एक हीलिंग वेकेशन का एक्सपीरियंस देने में भी हेल्प. So let us invite on screen our very own dear Amy AZHANI M YOSOF from DXN Malaysia and Boulder Valley. Hello. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Ms. Amy. How are you? I'm doing great here, since even though quite busy. Today we have lots of treatment, packed with the treatment, but I managed to catch up with you all. Thank you for inviting me. Yeah. So, Amy, thank you for coming on our show. I will ask you some questions based on your experience with, practicing Shunya and being a part of our DXN family. And my friend and co-host, Ms. Fahila, will translate it into Hindi for our audience. Okay, sure. So let's start. So अभी से स्क्रीन पे जो होंगे उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ for our audience. All right. Thank you, Fahila. So, shall I go to the questions, Ms. Amy? Okay, sure.
Okay. Your first question is on the screen. When did you first learn about Shunya, and since when are you practicing it? आपका Okay. पहला सवाल ये है कि आपने पहली बार शून्य के बारे में कब सुना और आप कब से इसको प्रैक्टिस कर रही हो? Okay. Hi, everybody. Good morning. Okay. First of all, I would thank Dr. Lim Xiaojin for a very good, big opportunity for me to experience the Sunya concept in all aspect of life, even a business method, on marketing, on therapeutic system, therapy, and also on uh, philosophy, a life philosophy. So this is, I think, a big present for me in my life to meet Dr. Lim. So thank you for that. And for your information, uh, I can say that the earliest person that get chance to be mentoring with Dr. Lim are me and also Dr. Rajesh Savera. But I was at the backstage, no problem about that. And I was learning this thing since 2018. So it's almost 2 years already. And before that, I learned on the philosophy first. Because since I knew Dr. Lim since 2015, I managed to catch up a lots of beautiful philosophy about the world, about the life, about humanity, and about business itself. So I am very mesmerized of the concept of nature approach that being introduced by him. So when he introduced Sunya practice, so it's like complement to what I get already gather from him. So this is all about simplicity. Okay, you can translate first. या श्योर। तो एमी का ये कहना है कि सबसे पहले वो बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगी डॉक्टर लिम का, क्योंकि उन्होंने उन्हें इस शून्य कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया। उसी के साथ-साथ ये सबसे पहली स्टूडेंट है जिन्होंने डॉक्टर राजेश सवेरा के साथ डॉक्टर लिम से शून्य के बारे में सीखा, लाइफ की फिलॉसफी, लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ के कैसे रूल्स होते हैं, उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, इसके बारे में जाना। ये डॉक्टर लिम से 2015 यानी 2015 में मिली और उसी के साथ-साथ उन्होंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा अबाउट बिज़नेस कि बिज़नेस कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, खुद को मैनेज कैसे करते हैं, लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं और बहुत कुछ। इसी के साथ-साथ वो एक नेचुरल अप्रोच प्रैक्टिस करती है। नेचुरल अप्रोच का मतलब होता है कि आप नेचर से कितने क्लोज़ हैं, नेचर से कितने अटैच्ड हैं और साथ ही साथ कुदरत यानी नेचर से क्या-क्या सीख सकते हैं। तो डॉक्टर लिम के जो टीचिंग्स थे, डॉक्टर लिम ने जो सिखाया और जो इनका ऑलरेडी बिलीफ था वो एक साथ आ गए और इसीलिए इन्होंने शून्य प्रैक्टिस करना सीखा और डॉक्टर लिम से काफ़ी और। सो ओवर टू यू एमी। Okay. So we're still in question one, right? All right. Yes. Okay. Since 2018, we're started to go to India, Hyderabad, Telangana, because of the socio-economic cost. Before that, I remember Dr. Lim met me in KL, in PJ office, and he mentioned um, about the India. A few times he went there, and something is not good, when people on differentiate on the religion side, on the caste side. So he kept thinking about that. So he think like it's a wake up call to come to India because a long time he said he didn't come to India. And I said, okay, I would like to go there also. I said, that's what my first experience. And then when I was there with him, yeah, I'm quite surprised. I can see the progress. When we meet this kind of people, let's say from a Buddhist side, which is not so keen with the Muslim side. Even when I was first there, it's not easy for them to accept me, fully because of this sentiment. So this is what Dr. Lim wants to break it off. So this is about non-differentiation. And to our surprise, I went there like 4 or 5 visit already. So on our second visit, so Dr. Lim already gave some thought to them.
There's no mantra, no statue, practice non-differentiation, then we can unite everybody. And the third time we come, then we can see. So the hardcore, so-called hardcore Buddhism also, they join the ring, they join our movement and become so open-minded and have peace in mind. So it is true, when you have something that you hold for yourself, it's your ego, and then on your, sentiment, your perception, you cling to name, you cling to image, you cling to the idea and philosophy that is not neutral at all. Actually, you make yourself in that imbalance or stressful mode. So this is what we can see. After that, one by one, people we can see the peacefulness in them, in their mind, in their thought, and their actions. And this also happened to me. Before this, I always, so quite stressful. I agree. And I also have this kind of, during my study time, I also have this kind of bipolar disorder. I try to be so perfectionist. Then at the end of the day, it's like killing myself, killing my heart, my stomach, everything. I got the gastritis, everything. And it's not good also, because mind and body cannot be separated. What happened to your mind, it reflects to your body. So what I suffered before is due to the mind condition of myself. So I'm quite stressful during my youth days, for your information. So whenever I was mentoring with Dr. Lim since 2015. Actually, at the end of 2014, I met him. Then I start to realize that life is quite simple, but don't take it too easy. You mean simplicity is like you let go everything, and you just be yourself and go with the flow like water. So every time the problem come to you, no matter what, you have this resilience inside yourself that can face all these challenges. So this is what happened to me, and it's like, a very big enlightenment. I know Dr. Lim dislike this kind of word enlightenment, but it's happened to me. You can see, even though we've been through a lot of work, busy times, and also problem here and there, I managed to, to appear like calm, some calmness effect, and then it give a very good resonance to other people as well. But before this, I talk too fast, and my heart is very fast also. And I always try to achieve target, I always think about all those material things, and I like neglected myself. So now it's all about make peace with ourselves and make peace with surrounding. Then it's like the flow. Your life will be very, very easy. So this kind of philosophy also, I taught to several leaders in Malaysia, local Malaysia, DSN Malaysia. Okay, I try to make one, we call that focus group, or this focus group. Okay, I try to implement this natural approach, idea and philosophy. End up, we managed to come up with a star diamond, without knowing about marketing plan. Can you see the beautiful about natural approach way? See, this is the beauty of it. And the whole group of that very independent. They are not fighting each other, for title. They're very peace. And then their income, their PGPV, their personal group point value also very. It's like one of them, each of them more than 300, up to 1,000 PV, personal PV every month. So this is the achievement. Without you have to be too pushy, you don't ask people to accept your idea, but you go with your flow. But they will see you as example, like we see Dr. Lim as example for Sunya practice. So this is the thing that we need. Because when I know Dr. Lim always said to me, it's not about the, the very magical marketing, all the billboard here and there, all the very beautiful packaging, beautiful pamphlets, brochure, flyers. No, it's not
it's not the important thing in your successful, because it's nothing to do with your success. Actually, that is a tool, but the real tool is yourself. So if you're very positive, you're a successful kind of people, whatever you do, you'll succeed. That's very simple. So you must get a balanced state in yourself first before you try to approach others. Because when you yourself not center your mind and your body, because whenever you meet people, you have the tendency to push, to impose your idea to people. People will back off, So that's not good. But natural approach way is like sell without selling, treat without treating, heal without healing. So this kind of approach, I tell you, I also implement in my therapy system. So how to make sure, okay, I share you the tips, how to make sure people take our products effortlessly without they have, they think that you are a salesman. It's very simple. First, you learn gynotherapy very well, and you must be a very good user. First of all, you must know what you're talking about, what's the effect. Then you have confidence to talk because you are the products, okay? You don't depend on, all the scientific research, everything without knowing what you're saying. So be simple. Talk the thing that people may understand you better. So that what happened to me when I do all the therapy things and also teach other people also on this therapeutic system. I always tell them, when you do the massage, okay, from the massage itself, you can see from the people's body, you can take picture before and after. So then when you do it with our gano oil, they can feel the difference. Then you take the picture. So one hand with gano oil, one hand without gano oil. Then you compare. Very simple. Seeing is believing. It's always a powerful method of marketing. That when people see the difference, they will say, wow, it's true. I can feel it, because you already activate their senses. So this is the important things in marketing and sales. You need people to understand better. So they need to feel it. So that's what happened. And all the clients and all the members managed to sell the products effortlessly. So end up every customer of them or their members or their downlines manage to bought product 300 PV at least per month without you have to remind them every month. So this is the beautiful of the nature approach. You must remember that at the end of the day, it's all about sales. So there's no point to push people on what they didn't like or listen to. So go to the people, try to give them solution for their problem, and try to listen to what is their potential also. So all this are beautifully crafted in the focus group that I already, I already guide. So I already consult this group. So this group has a lots of, silent SA and SD as well. But of course, with knowledge in the future, when they know what to do with their marketing plan, they can become, I think they can become a very sustainable CA in the future, inshallah. Okay, I think I talked too much. ओके आमी, सो आई ट्रांसलेट व्हाट ही जस्ट सेड. तो आमी का ये कहना है कि जब शुरुआत हुई तब कुछ 2018 में उन्होंने हैदराबाद विजिट किया. हैदराबाद आने का डॉक्टर लिम के साथ उनका रीज़न काफ़ी सिंपल था, क्योंकि डॉक्टर लिम ने देखा था कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. कुछ प्रॉब्लम इस तरह की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम है और फाइनेंशियली या पैसों के इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने हो रहे हैं. दूसरी बात ये कि यहाँ के लोग जो है ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंशिएशन करते हैं, एक दूसरे को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे में कुछ कमियां निकालते हैं, एक दूसरे को अलग नजरिए से देखते हैं. तो ये सब चीजों के लिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आके हम एक शून्य रिट्रीट सेंटर जैसे की शुरुआत करेंगे. साथ ही आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे जानते हैं इंडिया इज नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी एक बहुत सारे धर्म, बहुत सारे बिलीव्स का एक बहुत ब्यूटीफुल सुंदर सा देश है. लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मैसेज लाना जो हमारी कंट्री के साथ सेम टू सेम हो, जिसका मतलब था कि नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. आप कोई भी धर्म से हो सकते हो, आप क्या खाते हो इस पर कोई आपसे भेदभाव नहीं करेगा, या इस टाइप का एक आइडिया जो लाने की शुरुआत की थी. तो एमी उनके साथ यहाँ पर इंडिया कुछ
4 से 5 बार आई है, लेकिन उन्होंने जो चेंजेस देखी या जो बदलाव आए वो कब देखना शुरू किया, जब वो यहाँ पर अपनी 3rd विजिट को आई। तो यहाँ पर शून्य सेंटर जो हमारा रिट्रीट है तेलंगाना में, वहाँ के कुछ सिंपल से रूल्स है कि यहाँ पर कोई मंत्रा की चैंटिंग नहीं होगी, कोई स्टैचू या कोई पुतला नहीं होगा, और साथ ही साथ जो हार्डवर्क था वो दिया गया। एमी का कहना है कि यहाँ पर जो लोग होते हैं यूजुअली वो कुछ ईगो रखते हैं, कुछ अपने साथ कुछ खट्टी और बुरी भावनाओं को हमेशा साथ में रखते हैं। जब हम उन भावनाओं को पकड़ के रखेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिविटी या मन की शांति प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने जो मन और हमारे शरीर को जो सिंक में लाना है या एक साथ लाना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें शून्य करना बहुत जरूरी है। आमी ने ये भी बताया, जो सुन के मुझे काफी आश्चर्य हुआ, कि जब वो अपने यूथ डेज में जब वो पढ़ाई कर रही थी या जब वो डॉक्टर लिम के साथ मेंटर कर रही थी, तो तभी वो काफी अलग थी। वो बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की कोशिश कर रही थी, कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी चलते थे, जैसे कि हर चीज टाइम पे करना है, हर चीज परफेक्टली करना है, और जब ये चीज अच्छे से ना हो पाए तो उन्हें प्रॉब्लम्स होती थी, या मेंटल एक सेटबैक या एक डिसअपॉइंटमेंट खुद से हो जाता कि मुझे कोई चीजें मैं अच्छे से कोई चीज कर नहीं पा रही हूँ। हमारा जो यूजुअली जो हम एक यूथ देखते हैं, या हमारा जो एक टाइम होता है जब हम 18 से 25 या 18 से जो 26 का जो टाइम होता है, तब हम ये बहुत सारे, मेरे जो फ्रेंड्स है, बिकॉज मैं भी उस सेम एज ग्रुप की हूँ, तो हम ये प्रॉब्लम जरूर देखते हैं कि हमें इश्यूज फेस होते हैं कि हम कोई काम अच्छे से ना कर पाए तो भी प्रॉब्लम, अच्छे से कर भी लिया तो एक फीलिंग आता है कि मैं वापस कर पाऊंगा या नहीं। तो ये सारी फीलिंग्स जो होती है ये काफी आती है। तो उसके लिए आमी का एक सजेशन है कि आप आपकी जिंदगी को इजी वे में ले, पर इतना भी इजी नहीं कि आप आपके जो रूल्स है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसे भूल जाए। साथ ही साथ जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करिए, एक नेचुरल अप्रोच की तरह प्रैक्टिस करिए। उन्होंने 3-4 बातें काफी अच्छी कही कि सेल विदाउट सेलिंग, हील विदाउट हीलिंग, एंड ट्रीट विदाउट ट्रीटिंग। कि आप जो चीज करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह अपना ध्यान परीक्षण करिए, पूरी तरह फोकस करिए, रिजल्ट्स का टेंशन मत कीजिए, वो अच्छा ही आएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात शेयर की कि डॉक्टर लिम हमेशा कहते हैं कि कोई भी मैजिकल ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े पोस्टर्स करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। जो भी सिंपल होती है, जो भी चीज साधारण होती है, वही चीज आगे तक टिकती है और वही चीज लोगों के जीवन में बदलाव लाती है। उनके 2-3 ग्रुप्स भी है जिनको वो फोकस ट्रेनिंग ग्रुप्स बोलती है, और वो उन ग्रुप्स में काफी ऐसे स्टार एजेंट्स है, काफी ऐसे स्टार डायमंड्स है, जिन्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको इतना पीवी करना है, आपको इतने सेल्स करना है। वो फोकस ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो शून्य प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने आप उनके साथ लाइफ में हो जाती है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना, एक मुझे बहुत प्यारी चीज जो ये लगी, वो ये है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी से कम है या आप कुछ नहीं कर सकते। एक खुद पर विश्वास करिए, खुद के साथ दोस्ती करने की कोशिश करिए, शून्य प्रैक्टिस करिए, फोकस ट्रेनिंग करिए, और चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो जो नेचुरल अप्रोच का जो थ्योरी था, दैट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन। सो Amy, thank you for giving us such a beautiful brief about how DXN helps, how business also is a very important part in and how Shunya can also help us in business. So Pradeep sir, over to you for the next question. Yeah, thank you, Fahila, for a very detailed explanation. Thank you. And Amy, your second question is, you always talk about detachment and focus training. How does Shunya help with that? Okay. All right. Very, very good question, Mr. Pradeep. I like it. Okay. I always intro to people, that have a little bit sentiment or a newbie about Sunya with detachment practice or silence therapy. Why? Because this is like Dr. Lim's also, because I am his mentee, so I always follow my sifu. So when he always said like this, right? When you want to intro people on DSN, don't sell Ganoderma, right? Sell the solution. So that's what I'm doing. I can see that detachment practice is
a very, very important component in any meditation or training. But the problem with other school or other technique, they may not last longer or permanent. It's because I'm also a hypnotherapist before. So I'm a certified hypnotherapist, and I've been in the class in 2014. And then I've learned how to, go to trance, to sleep everybody for the sleep therapy. And then you can just cut everything. It's like you manipulate your mind and to cheat your mind actually on sudden event. So, but what I admire most about Dr. Lim's method, yeah, it's not his method, of course, but he's the one who introduced us. So he taught us about the real detachment practice. So this detachment practice is something to do linked with the mind focus training as well. Because we know that Sunya is all about reverse counting. There's no mantra, no statue, no temple, right? So this is all about mind focus training and detachment practice. So how to focus if when you do the reverse counting 9 to 0 or 29 to 0 or even 99 to 0, when a lot of disturbance come to your mind, it's like a monkey mind. Fahila always said like that, also Dr. Rajesh. So this is like the things. When you try to focus, your mind's so naughty, they would like to tease you and make you think about something bigger to make money, $1 million idea, and also think about something that might make you, not focus on your previous counting. So this is where the detachment practice or terms come. So when we do the reverse counting, so whenever this come to your mind, you cannot stop yourself because it's a natural things, yeah? Then you must detach it by just see as a third person. That's it. Okay, you cannot kill, you cannot do acupuncture on your mind, on your, and on your head, to drink something to vanish it. No, this Sunya is all about training yourself to be more resilient to anything, inside and outside your world. So whenever it comes to your mind, very simple, you just detach it by, you stick to the count. So this is more powerful than just go to the trance in hypnotherapy. This is my opinion, but some of you might not agree, but this is my opinion because I've been through all of this. And when you take this thing into your real life, okay, this is a very, very significant and it's really, really related. Okay, when you do the detachment practice, you used to the reverse counting without fail, let's say. It shows that you have this kind of resilience in your mind and your own body to face any challenges that come to you. So, okay, based on my experience, I also agree. Okay, sometimes or many times I also in this, depression mode where a lot of things come up in one time. Actually, it's a challenges to us to become stronger and more success. It's true. But when you in that condition, not all of us like Yoda, very cool one like that. No, we have tendency, we have choice, either to be silent and make peace with ourselves first, or we try to burst everything like a volcano. So your choices, really make you. So when I got the problem now compared to before, I didn't mingle with people. I try my own space. I will do at least 9 to 0. Like, let's say I'm on the table of restaurant and I just see one dot and I just stare at it and count 9 to 0 and the tears will subside. Yeah, whenever you're in that mode, mostly your liver quite heaty. So you need to release it. Some people have tendency to just getting mad with other people, just, to release the heat from the body. So you must
You must remember this. Yeah, as a therapist, I always observe people. People with hypertension, especially, they have this kind of, you know, they have kind of this problem in them. They have tendency to shout, you know, to call the people, to use such the F word, and then their lack of water also, you know, consumption, and lead them to be in that aggressive mode or depressed mode. So as for me, I like to find my own space, and I will do the sunya things. Or if I'm in the middle of meeting, I will try to find some, you know, rest time, and I do it, even 9 to 0. So this is not a meditation that you need to spend 1 hour or two or half day. No, it's a very simple thing, only 9 to 0. I think a couple of minutes, 1 minute or less than that, I think you can complete it and you can be in, you know, balanced state again. But sometimes you feel that you need more. Of course, you go back to your room, then you do it. Okay? Don't do while driving, in shower time, or during the intimate time. Don't do that. I have this interesting story when I reached Hyderabad airport. Yeah. Uh, so we have to go to the visa, you know, counter, everything. Yes. Then there's a small camera in front of me while that officer, immigration officer, tried to check my passport, everything. Take time actually. So I took chance on seeing the small dot on the camera, and I count 9 to 0. And it's helped. It's very peace, everything. And the amazing part is, the officer let me in without a lots of questions like before. Because you know, when you're a lady and you come there, a lot of questions, tons of questions they will ask you until they're satisfied. But that time it's like everybody like welcome and make ease for myself. So that's a very good thing also. So you have to manage your time to do it. Not necessary to take a longer time. It depends on you. And then detachment. So most of the time we need to do a very right decision. So this is something to do with the philosophy being taught by Dr. Lim. Okay, to get everything right, you know, in action, in your effort, in everything. First thing first, you must have the right view. This is the problem for people nowadays. Why we didn't unite? Why we have this differentiation? Because we didn't have this right view. Not all of us get this right view. So how to get the right view? Because when we get the right view, we have tendency to get the right thinking. And then we have tendency, it will lead to right effort, right action, and also your life will getting right as well. The result will getting right. So to get the right view, you must be in a balanced state first. So it is a must for you to detach whatever thing that not necessary to you, but without without hardship. Do sunya is no need to push yourself. So you just sit, you just do the reverse counting and just focus on your breathing. That's it. Very, very simple. There's no method like you need to breathe in through your nose, breathe out through your mouth. No, it's very simple, like a normal people used to breathe. So that is the method of our breathing in Sunya. I found this very, very simple, and I already taught also 4-year-old boy and other kids as well. And of course, they're very, very good. They can get it easily and end up, of course, the academic level also become higher during every month. We can see this kind of result. And for I have this, okay, I will share you this kind of things. One of my long distance patients, she's actually have a tumor on her right hair, and they come out at the back also. So actually, doctor already said to her that she will end up during 2016, but now she's still alive and still consume our product.
And there's one time I come back from Hyderabad, then he texts me, Amy, please come to meet me in Malacca. Malacca actually quite far from KL, I tell you. It's like 2 hours drive something. And that time actually I just suffer from back pain because I just sleep in my toilet. So I also need to cure myself. So I said to her, sorry, sis, I cannot make it, but I can teach you. Then he said, I'm in the hospital now. What you can teach me? Okay, I said, now you're in the hospital, you cannot wake up, you cannot walk, you cannot eat. Then I said, you just see on the top, on the ceiling. Okay, you can see the fan? Yes. You see any dot on the ceiling? Yes. So say, can you focus on that dot and count? Cannot. What about you close your eyes? Cannot also. Even simple 9 to 0, meaning her depression stat is very high. That's why she cannot eat. She couldn't wake up, to walk, to go to the washroom, everything. So she's been hospitalized for 3 days that day. So I said, if you cannot even count while closing your eyes, can you just find any dot on the ceiling and just focus with 9 to 0 first? And luckily, for the second time, he said he managed to do it. And she said, something happened, she said. It's like the heat come up from her, her skin pores. The heat come up from that. And she said he can feel her feet vibrate like that. I said, good. Now you focus 29 to 0. And she tried to do that. Amazingly, the next morning, she already can walk to the toilet, to the washroom and get bath and drink a lot of water, mineral water. So that is a self-healing, very miracle one. And then she said, what happened to her? Before this, she feel very, very cold until a lot of blankets so cannot cover the coolness. But once she did this SUNYA technique, therapy by herself, she can feel the heat release from her body, and then she feel very, very hot, heaty, and then sweating. She sweat a lot, long night. Then she said she needs a lot of water. Actually, that's a remedy. She need to drink water. She need to take enzymes. She need to take fruits. And yes, after a day, doctor said they will bring her to the city, KL city, the big hospital in the city for scan and if necessary to do the surgery on the tumor part. And she did what I said. Every day she did the SUNYA therapy, okay, until 99 to 0. They're in the hospital. Then when the time came in the hospital in the KL, I also wait to meet her actually, but I'm very busy with the DSN, work. Then she said, okay, I'm already on my way back to Malacca. I said, why? Why so fast? What happened to you? So what doctor said about you? They said, it's amazing that the tumor getting shrinking and asked her, you didn't feel any pain on your head or something? She said, no, because the doctors also surprised by her look, by her physical look, appearance, because she looks like a healthy person. And then end up, the doctor said like this, you try to find solutions of, natural products. And for your information, none of the doctors before encouraged her to take any natural products at all because they ban it. They said, you just use whatever drugs or medicine that been prescribed to her. But now, amazingly, it's turned 360. The doctor itself said to her, you find the natural medicine for this. You can try blah, 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 noni, whatsoever. And then, of course, she took our Morinzi or the noni drink. And she still sustained till now. This a very miracle happened. And for those out there, you must know that every day she lost 1 kg because of the SUNYA also. When she hospitalized, she already, take her weight on the weight scale. Then before she left,
from the hospital, she asked me, so this Sunya practice can have a lost weight effect? I said, why? Because before I check into the hospital, this is my weight. And after that, this is my weight. It's like I'm losing 7 kg while hospitalized, even though I eat a lot. I said, congratulations. At least your fat become burned and then your water circulation become better. And every day you drink a lot of mineral water. That's a very good improvement. And after that, he no more hospitalized. So that's a very good testimony of this tumor patient among my earliest client on the Sunya practice. As I said too much, right? Okay, Faila, can you translate to that? Hello? Am I audible? Yeah. So what we'll do is that we'll take little testimonies, and then you can, I'll also translate with them. So thank Okay. you for sharing all that. That's wonderful. There are a lot of lessons to translate, so I'll do that right now. ओके, तो एमी से हमने एक सवाल पूछा था कि ध्यान परीक्षण और जो निष्कर्ष होता है, जिसका मतलब होता है डिटैचमेंट, ये आप हमेशा क्यों एक्सप्लेन करती है जब आप शून्य के बारे में बात करती है? तो उन्होंने बहुत अच्छे और साधारण तरीके से समझाया कि वो अपने शीफू को फॉलो करती है। उनके शीफू कोई और नहीं, हमारे डॉक्टर लिम है। एंड उन्होंने हमेशा उनसे एक बात कही है कि आप ज्ञानोडर्मा को मत बेचो, आप दूसरों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भेजो, यानी कि आप दूसरों के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ओके, सो डिटैचमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटैचमेंट के लिए बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती है जो आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी भी प्रैक्टिस करता है, पर एक लॉन्ग रन में देखा जाए तो वो सारे टेक्निक्स कुछ परमानेंट नहीं है या हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो आपको ये ही बोलते हैं कि आप आपके माइंड को मैनिपुलेट करो, आप आपके माइंड को मैनिपुलेट करो। बट यहाँ पर हम शून्य के बारे में जब बात करते हैं तो बेसिकली कि आप आपके माइंड से दोस्ती करिए, आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए। तो इसमें एक सिंपल सा ये है कि यहाँ पर कोई मंत्र नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है। तो उन्होंने पहले निष्कर्ष यानी डिटैचमेंट के बारे में जब बात किया तो उन्होंने यही कहा कि एक बहुत सिंपल सा जो एक प्रैक्टिस है ऑफ रिवर्स काउंटिंग। जब हम शून्य करने बोलते हैं तो हम एक चीज बोलते हैं कि आप रिवर्स काउंटिंग करें, यानी आप 9 to 0 जाइए, 29 to 0 जाइए, 99 to 0 जाइए, और आप ये प्रैक्टिस डेली करिए, ट्रेनिंग डेली करिए। अब आजकल की जो जिंदगी है जहां पर बहुत सारा रश है, हरी है, करी है, वरी है, वी आर ऑलवेज इन अ रश कि हमें ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। तो बहुत बहुत कॉमन है कि हम फोकस नहीं कर पाते हमारे एक काम पे जो हम कर रहे हैं। यहीं पर आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मंकी माइंड, कि हमेशा हमारा माइंड हमें टीज करता रहता है, मल्टी बिलियन डॉलर आइडियाज देता है, या अलग अलग बातें करता है, लोगों के बारे में कुछ हमें कहने की कोशिश करता है। सो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड। हमें हमारे माइंड को एक कंट्रोल स्टेट में लाना है, एक काम स्टेट में लाना है, एंड शून्य आपको वो हेल्प करने के लिए करता है। अभी एक सिंपल सी बात है, आप आपकी मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग बहुत टेंस जा रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वहां पर आप आपके लिए 2 मिनट ले लीजिए, कोई भी एक छोटा सा डॉट फाइंड आउट करिए, आंखें खुली रखिए और उस पर फोकस करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ आप आपकी जो सांस है, जो इनहेल और एक्सहेल, जो सांस आप अंदर ले रहे हैं और जो सांस आप बाहर जाने दे रहे हैं, उस पर फोकस करिए, उस पर ध्यान करने की कोशिश करिए। ये एक बहुत खूबसूरत सा फिनोमेना है जो हमारे साथ हो रहा है, उस पर आपको ध्यान लगाना है और उस चीज को आपको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना है। शून्य का जो ट्रेनिंग है वो करने के बाद आपको जो इफेक्ट्स है या उसके जो बेनिफिट्स है वो आपको सिर्फ बाहर या अंदरूनी इस पे नहीं दिखते, आपको आपके अपीयरेंस में, आपके आउटसाइड पे भी दिखाई देगा। साथ ही साथ डिटैचमेंट का जो निष्कर्ष का जो एक कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा सिंपल है, जिसके लिए आमी ने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर किए कि जब वो हैदराबाद आई थी यहाँ पर, तो जब हमारा वीजा काउंटर होता है, इमिग्रेशन होता है, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कोई चीज को लेके। तो वहां पर उन्होंने बताया कि एक कैमरा के छोटे से डॉट पे उन्होंने कैसे फोकस किया और उसके बाद उनका आगे का जो प्रोसीजर था वो सिंपल हो गया। तो ये उनकी खुद की निजी एक्सपीरियंसेस है, उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो वो हमारे साथ आज शेयर कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने अपने एक बहुत ही अच्छी टेस्टिमनी के बारे में बताया कि एक पेशेंट थी जिनको जिनको ब्रेन ट्यूमर था, बैक ऑफ द हेड उनको ट्यूमर था। एमी इंडिया में थी, जैसी वो मलेशिया पहुंची वहां पर एक कुछ ही डिस्टेंस पे उनकी वो पेशेंट रहती थी और उनकी पेशेंट ने कहा कि आप आके मुझसे मिल लीजिए।
क्योंकि आमी को बाकी भी काम होता है तो आमी वहां नहीं जा पाई, तो उन्होंने बस उनसे एक सिंपल सी बात कही कि आप अभी कुछ कर सकती हो, तो पेशेंट ने एकदम से कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम बस आ जाओ। उन्हें बोला कि आप पानी पी सकती हो, नहीं, खाना खा सकती हो, नहीं, बेड से उठ सकती हो, नहीं। तो आमी ने कहा कि ठीक है, आप बस आपकी जो सीलिंग है, जो ऊपर सीलिंग जो होती है, छत जो होती है, उस पे देखिए, उस पे ध्यान लगाने की कोशिश करिए। पहले पहले शुरुआत में उस पेशेंट के लिए वो करना भी बहुत मुश्किल था, पर धीरे धीरे जब उन्होंने ट्रेनिंग की, उन्होंने जब प्रैक्टिस की, हम हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो साथ ही साथ उन्होंने जब वो प्रैक्टिस करना चालू किया, ऊपर देखना चालू किया, तो उनके माइंड को एक कामनेस मिला। उसके बाद उन्होंने शून्य स्टार्ट किया, यानी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट किया, और ये चीज उन्होंने डेली की। उन्होंने वो जो प्रैक्टिस था वो डेली करना चालू किया। धीरे धीरे उनके बॉडी में चेंजेस आए। डॉक्टर्स भी शॉक हो गए उस चीज को देख के। डॉक्टर एज यूजुअल उन्होंने उन्हें एक डेडलाइन दे दी थी कि इसके बाद शायद आपका जीना मुश्किल होगा, पर वो पेशेंट अभी भी है और हम उनकी लंबी जिंदगी के लिए भी दुआ करेंगे आगे। वो हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती है, और साथ ही साथ उनका जो वेट लॉस था वो भी हुआ। तो एमी ने इसके बारे में मुझसे पहले भी बात की थी, और मैं काफी शॉक थी इस चीज को लेके कि ये कैसे हो सकता है, पर हाँ, ये हो सकता है। शून्य करने के साथ साथ जो माइंड और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है वो होता है, यानी माइंड और बॉडी से जो कचरा है वो साफ होता है। और उसी के साथ साथ जो कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें डिप्रेशन का फीलिंग आता है, डिप्रेशन यानी मानसिक बीमारी एक स्टार्ट हो जाती है, तो उस मानसिक बीमारी को भी ओवरकम करने के लिए शून्य ने वो पेशेंट को हेल्प किया। डॉक्टर्स ने बाद में उन्हें कहा कि अब आप ये हर्बल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करिए। उनका हेल्थ चेंज हो गया, उनके कुछ 7 kgs लूज हो गए जो उस प्रोसेस के दौरान जब वो शून्य प्रैक्टिस कर रही थी। तो यस, घर बैठे बैठे इजी और सस्टेनेबल एक जो सोल्यूशन होता है आपके मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को, वो है शून्य। हम यूजुअली हमेशा सवाल का जो जवाब होता है वो बाहर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शून्य के थ्रू आप इस सवाल का जवाब जो है आपके अंदर, आपकी कोई भी सवाल हो आपकी जिंदगी के बारे में, वो आप आपसे खुद से पूछ सकते हैं। आपकी मन और आपकी जो मन की जो शांति है और समृद्धि है उस पर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ ये जो डिटैचमेंट प्रैक्टिस है, जैसे ही आप इस प्रैक्टिस को डेली करना स्टार्ट करेंगे तो आप आपके लाइफ में एक सही नजरिया पा सकते हैं, एक राइट व्यू पा सकते हैं। उसी के साथ साथ एक छोटी सी बात यहाँ पर शेयर करने जाऊंगी जो आमी ने कहा कि आप आपके बच्चों को भी ये सिखाएं। वाई? बिकॉज उनके पास एक टेस्टिमोनियल था कि 4 साल के बच्चे ने भी वो प्रैक्टिस किया। क्योंकि ये इतना आसान है, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है, तो बच्चे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी के साथ उनके जो एकेडमिक्स है यानी पढ़ाई, आप अगर किसी भी बच्चे से बात करेंगे उनकी टीचर से, तो एक ही चीज बोलेंगे कि इन्हें कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन इज अनदर वर्ड फॉर फोकस ट्रेनिंग, एक दूसरा शब्द है फोकस ट्रेनिंग का। तो मेरे लिए ये एक सजेशन है। थैंक यू आमी फॉर शेयरिंग दिस विद अस, दैट बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए ये काफी हेल्प करेगा। तो आप उन्हें भी शून्य प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं। वेरी सिंपल, आप आपके लिए कंफर्टेबल जगह ढूंढिए, एक पॉइंट ढूंढिए चाहिए तो, अगर आंखें आपको बंद करके फोकस करने नहीं होता है, और उस पॉइंट पर 9 to 0 तक फोकस करने की कोशिश करिए शुरुआत में। जब आपके लिए वो थोड़ा आसान हो जाए तो आप 29 to 0 कर सकते हैं, 99 to 0 भी कर सकते हैं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आप आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए जरूर करिए। ये कुछ नहीं, बस एक चंद मिनट्स लेते हैं, 1-2 मिनट से ज्यादा ये प्रैक्टिस नहीं लेता। तो यस, डेफिनेटली thank you so much for sharing. I translated all I could, Annie. Thank you so much for sharing. हमारा ये कहना है कि I know आपके पास कोई presentations है. You have some PPTs for us to watch. So Okay, if you sure. can share it on the screen, we would love to watch. And Mana PPT yeah. tu? Okay, wait on. I'm pressing it. Okay, can you see it? So what we can do, Amy, is like you can give little descriptions about the slides, and Oh, I'll okay. sidewise. Okay. All right. This is among our earliest day when we've been invited to Dr. Vasupal Creation, a big event. I think after the Hyderabad one. So you can see all the PIC, yeah, wearing the kimono of the socio-economic cost. Okay,
So this is among the thing, among our earliest day. And yeah, this is among our earliest day also in Boulder Valley, where Dr. Lim conduct a SUNYA retreat for selected, I think I can say for the luckiest DSN members. Okay, so this is the second day. The first day is quite huge. We have like 25 people together with the Crown Ambassador Budiman Salim, Dr. Siva Kumaran, and also Dr. Salvam Govindasamy, and all the leaders. And then, yeah, I also been in this retreat in Slovakia. This is among the earliest day. This is the first European get to know about SUNYA. So this is very exciting actually. Yeah, this is what we conduct in Boulder Valley. You can see at the back, this is the same. This is a similar background of mine now. So this is, we already conduct for team building, integrate the SUNYA and also the ancient exercise therapy. Okay, so we did the SUNYA in team building, in light activities, the wellness and retreat program in Boulder Valley. And also for this, actually, this is a Philippines group. Okay, you can see with Mr. Azan, and this is our wellness coach beside me. He's very good in the martial arts. And then, yeah, you know who is this? Miss Tina Swilto, the Fox sister. Okay, so she's been appointed for Philippines as a Sunya Duta, and we are very glad to receive her here during February. And this is all the students from Davao. And can see the Crown Ambassador, Miss Nang Swelto. This is very, very fun moment actually. And you can see we also conduct a session for ancient sastraphy, something like physio. So we also train the mind and we also train the body. So you can come here and experience all the wellness thing. This is a self-healing actually. This is a very interesting picture. Okay. This is one of our member. Last time I operating myself at DXN PG branch, 5th floor. So a lot of cases I receive every month, every week. So one leader brought her sister to me and saying that she needs acupuncture treatment for her legs, because she have a problem. So also on the knee. And as a macrotherapist, we observe everything. Holistic is the thing that we see. So during the session, I needle her on her head, on both arms, and also some part of the knee. And during the session, it's like 2 hours. She kept telling us the story about her life, about her depression, about many sad things, that lead her to like being seeing this life like full of challenge. A lot of things happened to her, about her family problem, about the tenant that broke her house, a lot. And as a macrotherapist, I just listen to her story and keep doing my work on the needling part. And after that, after the session finished, I gave her a DXN Roselle juice, only a Roselle juice. Yeah, you can see how, these bubbles come, very tiny one. So they must have a special method to create this kind of drinks. So I think I mixed with the GL powder as well. I give to her. So I can share this one shaker with 3 cups. So you can see a lot of enzyme there. And I give to her to drink. Then her heat release. So some of you might think
can the SN product integrate with the SUNYA therapy very well? I said very, very well, it will help. So this is the testimonial that prove it, okay? So after the treatment session finished, I gave her the Roselle and she drank it. And after that, I said, let us do some close session, or say, because I also need to detox. So let us do Sunya together. So we just do in sitting mode like this, sit on the sofa. So you can see I the one who take the picture. She's on that side. So I said, okay, have you did Sunya before? Yes, because of some leader already been taught by Dr. Lim at Boulder Valley, like the picture I show you just now. And that leader brought this Sunya to the community at her place, but with closed eyes. And I said, what is the effect? She said, she feel like want to vomit, meaning that she have problem on the stomach. And stomach have problem with your mind. So it's very obvious she got depression problem. Then I asked her, have you tried with open eyes one? She said, not yet. Okay, let us do it, I said. So I said, you find one dot on the table. I gave her one kind of sign from my acupuncture needle. There's like one pin. When you throw away the tube, it's like come out with the color, right? The green one, everything. I put it on her. So she just need to focus with half wide open eyes. So I said, let us do 9-0. She do it 9-0. And then she said she feel like crying. She feel like her eyes like something to burst into tears. Then I said, then we need to do 29-0. And this is the effect from 29-0. This is along the counting, the reverse counting. She managed to focus on the point, on the one dot in front of her, and she's crying non-stop. And we just observe the moment. Actually, it is a very beautiful moment, I tell you. Because after she relieved, she cried like mad, non-stop. And we didn't do anything like, pamper her, no, nothing. She deal with her emotion by herself. This is a very beautiful technique of Sunya, I tell you. And then what happened to her? After the session, she feels so much relief. And all the problem on the knee part, everything's starting to subside. So this is my complement therapy when I listen to people's or the client's problem that they need this kind of therapy to enhance the therapeutic system that support their treatment. So this is among the very beautiful things. And guess what? He already become the SM member under that leader, and he already becomes Star Diamond. Every day she non-stop doing the marketing to other people by guiding people of this breathing exercise. She named it breathing exercise, but actually she already taught Sunya to other people as well. So every day she do this and she become very positive. End up she becomes Star Diamond effortlessly. So now I think she's heading to another title, or if I'm not mistaken. So congratulations to her. This is among a very beautiful story that can inspire us to be better person when you have that balanced state in you, and when you practice the detachment practice. Okay, so she already detached whatever happened to her. Whatever happened is happened. It is how you live now and for the future. So this is about the detachment practice or Sunya practice that I complement with my therapy, microtherapy. Of course, this end product is very, very essential in my therapy. Since I know she got a problem with her heart, she have a very fast heartbeat. So Roselle is a calming drink
and therapeutic and anti-inflammation that can suit her. So I also mix with the GL powder and I shake it very well. You can see the very energy Roselle drink there, and can share with 3 of us. Okay. And then one more I want to share to you. Azan yang kakak nangis in Boulder Valley. Okay. In Boulder Valley, we have this. No, yang kakak nangis tu. So Boulder Valley also 1st January 2020. Okay, have a look. Okay. All right. Okay, we can repeat. I can. Okay. This is my 1st January 2020, my first patient for this year. What happened to this sister? Actually, she managed to get my. It's okay. She managed to get my treatment, first treatment, accidentally during my, martial art class. So she got problem, a very hardened frozen shoulder one. I just put my emergency needle on her. So after that, that is already 2 years past. And to my surprise, she called me on 1st January saying that she want to come to Boulder Valley. I said, where you reside now? I already reside in Penang, and my husband already taught in the nearby school nearest to our place, at Telok Bahang, near Boulder Valley. I said, congratulations. Then she said she want to be new her. She said, I want to be new me because I always have problem, I always demotivated in my workplace, and I always think that I cannot pursue anything, in advance. I like a failure person. I always think that a lot of things happen, disturbing my mind. Actually, based on her problem, I already know that she need the SUNYA therapy, but because she need the needle as well. So in the jungle glass house, we call this outdoor therapy of Boulder Valley. So she went to our glass house, and then I asked her to do SUNYA 920 first. Just imagine, 920, she couldn't finish it, even with closed eyes. It's very obvious that she got depression problem. And then I do this kind of needling on her head. We call this scalp macro acupuncture. Without her, she need to take off her scarf. I managed to find a point. So all the heat come up from the head. Yeah, because she always said she got migraine, headache, etc. And then you can see also on her shoulder, there's a frozen shoulder point. It's a very hardened one. I put needle on that also. And it's released some of her stiffness muscle. Then I said to her, can you do SUNYA now while doing this thing, 920? Suddenly she burst into tears. So it's very obvious mind and body cannot be separated. What happened to her mind also conflicting of her body conditions. She got a problem on the blood circulation where the oxygen level not push enough to her head. So when we put the needle, the air come up from it, and then it release some and make the blood flow more efficient, and therefore she could focus better. Then you can see a lot of, all the mucus come up from the nose as well. This is the symptom of heaty liver and also the lungs problem.
We call that water congestion problem. So yeah, thanks to our Sunya, after that, she become more 10 years younger than her original face. So this is the beauty of it. I may show to you many testimonial in the future, but let us just finish here. If you want to know more, I can compile my case on this, even for gynotherapy and macrotherapy. I can show you before and after the session on the weight loss effect as well. And then also on the reverse aging also. I think then you can use that slide to promote as well because it's genuine. I really practice this thing and I'm willing to share to you now. Now. Okay, Fahila, continue. Yeah, can you show us the slide again so that we show it, so that I can explain it Sure, slide by sure, sure. slide also. Slide. Yeah. Not slide tu tadi. Okay. This one. From the first one, if we can go, that would be wonderful. This one. Kau buat kat situ je tadi. Mana? Mana? Like this, Yes. Fahila? Okay. तो आमिनी एक बहुत प्यारा सा प्रेजेंटेशन है, ये उनके सारे पिक्चर्स, उनके केस स्टडीज के बारे में यहाँ पर हमें बताते हुए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हमारे इंडिया फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर प्रोफेसर वासुपाल एंड डॉक्टर मिसेस रत्ना वासुपाल के साथ खड़ी है। यहाँ पर और भी दूसरे कंट्री मैनेजर्स एंड PICs है, उनके साथ डॉक्टर लिम भी है और ये उनकी फर्स्ट मीटिंग थी जो उन्होंने शून्य के साथ, शून्य के बारे में सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है हमारा, ताकि हम यहाँ पर किसानों को मदद कर सके, जो कॉटन फार्मर्स है या कॉटन के जो किसान है उनकी मदद कर सके, उस बेसिस पर ये मीटिंग थी सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ अभी के। तो ये वो पिक्चर है। एमी, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? या ये एक बहुत खूबसूरत पिक्चर है ऑफ डॉक्टर लिम वेयर ही इज टीचिंग अदर पीपल। वहां पर ये फर्स्ट मीट था जो बुल्डर वैली में हुआ और वहां पर वो बाकी लोगों के साथ शून्य के प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट पिक्चर। या ये वो फर्स्ट मीट है जो यूरोप में हुई थी। यहाँ पर भी डॉक्टर लिम, एमी भी थी। वी कैन सी आर डॉक्टर राजेश सवेरा सर, और ये सब वहाँ पर यूरोपियंस को शून्य प्रैक्टिस के बारे में बता रहे थे। ये भी वहाँ पर की एक फर्स्ट मीट थी। सो नेक्स्ट पिक्चर एमी। ये मैक्रोथेरेपी जो एमी प्रैक्टिस करती है और उसके साथ रिलेटेड जो एंशिएंट मलाई एक्सरसाइज है बुल्डर वैली में, यहाँ पर हमेशा सेशंस होते हैं जहाँ पर लोग विजिट करते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, किसी को कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स होती है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है। तो वहां पर एमी और एमी की टीम बुल्डर वैली में ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करती है जहां पर वो लोगों को मैक्रोथेरेपी और हीलिंग थ्रू नेचुरल एंड हर्बल मेथड्स के बारे में सिखाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर एमी। ये उनका ग्लास हाउस है, आउटडोर ग्लास हाउस है। बुल्डर वैली के बारे में और भी प्रदीप सर अभी आपको बताएंगे, और ये उनका आउटडोर ग्लास हाउस है। और उसी के साथ एमी के साथ वहाँ के एक जो बुल्डर वैली में ही रहने वाले एक मिस्टर अजान करके है, ही इज ऑल्सो अ थेरेपिस्ट। वो भी एक थेरेपिस्ट है जो वहाँ के लोगों को ट्रीट करने में, हेल्प करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर एमी। ये हमारी फिलिपिन की एक सिस्टर है, इनका नाम टीना है, और ये उनकी टीम के साथ वहां पर बुल्डर वैली गई थी, उसका एक पिक्चर है। नेक्स्ट पिक्चर आनी। फिलिपीन की जो क्राउन एम्बेसडर है वो अपने कुछ 40 स्टूडेंट्स के साथ बुल्डर वैली विजिट करने गई थी। वहां पर उन्होंने स्टेकेशन, जो हीलिंग वेकेशन है, उसका एक्सपीरियंस और अनुभव उठाया था। और यहाँ पर ये उनका एक पिक्चर है जो आमी ने हमारे साथ शेयर किया है। नेक्स्ट पिक्चर आमी। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को सिखा रही है कि एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए फॉर डेली डेवलपमेंट, और डेली आपका जो हेल्थ होता है, आपका जो मेंटल हेल्थ होता है, फिजिकल हेल्थ होता है, उसके इंपॉर्टेंस के लिए। नेक्स्ट पिक्चर है। यहाँ पर उन्होंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल शेयर किया है हमारे साथ। ये एक लेडी थी जिनके घुटनों में जो जॉइंट्स पेन था वो काफी था,
एंड वो लेडी काफी डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने एमी को विजिट किया और एमी ने उनके साथ जब एक्यूपंक्चर जो बोलते हैं एक थेरेपी होता है जहां पर सुई चुभा कर वो लोग नर्वस सिस्टम को सर्कुलेट करके प्रॉब्लम्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो जब एमी ने उन्हें ट्रीटमेंट देना चालू किया तो वो जो लेडी थी वो अपने बारे में बस बोलते गई बोलते गई बोलते गई। ये भी ऐसा काफी देखने हमें मिलता है कि लोग अपने बारे में कभी कभी बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, कभी कभी शेयर नहीं कर पाते एकदम, तो ये भी एक चीज होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारी एक एमी की जो टेस्टिमोनी थी वो उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते गई और धीरे धीरे उन्हें थोड़ा सा आराम लगने लगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो शून्य प्रैक्टिस करना चाहती है, लेकिन वो जैसी अपनी आंखें बंद करती है तो उन्हें पेट में दर्द होना चालू हो जाता है या उन्हें वॉमिटिंग का सेंसेशन आता है। तो एमी ने उनसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप एक बस एक पॉइंट रखिए। एमी ने अपना एक नीडल एक टेबल पर रखा और बोला इस नीडल पर फोकस करने की कोशिश करिए और अपने ब्रीथ पे जो है इन एंड आउट अपनी जो सांसें चल रही हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। धीरे धीरे वो लेडी वो प्रैक्टिस करना सीख गई। उसी के साथ फिर कुछ और दिन के बाद जब उन्होंने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू किया तो वो अपना नॉर्मल शून्य प्रैक्टिस आंखें बंद करके भी वो करना सीख गई। आज थोड़े दिन पहले वो लेडी स्टार एजेंट थी, आज अभी वो लेडी कोई और पोजीशन स्टार डायमंड की पोजीशन की तरफ बढ़ रही है। साथ ही साथ आई मीन द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ द रोजेल जूस। साथ ही साथ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एमी से कि क्या डीएक्सिन प्रोडक्ट्स और शून्य एक साथ मनुष्य के हेल्थ के लिए मदद कर सकते हैं, तो उसका जवाब हमें यहाँ पर मिल गया, क्योंकि वो लेडी ने काफी एनर्जी यूटिलाइज किया था अपना वो अपने शून्य ध्यान करने में। तो उसके बाद एमी ने उन्हें रोजेल जूस के अंदर जीएल पाउडर मिक्स करके एक शेक बना के दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं भी हमेशा कहती हूँ कि रोजेल जो होता है वो एक बहुत ही एंजाइमेटिक और एंजाइम बूस्टर है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे जूसेस होते हैं जो फ्लो करना बहुत जरूरी होते हैं। जब ये फ्लो नहीं होता बॉडी में, इजी नेचुरल फ्लो नहीं होता है, तो बॉडी के कोई भी जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है। इसी के बाद जब आमी ने उन्हें ये जूस प्रेजेंट किया जिसके अंदर उन्होंने जीएल पाउडर मिक्स किया था, वो सारे लोगों ने मिलकर वहां पर वो जूस पिया, तो वो लेडी को चेंज फील होने लगा। वो लेडी ने महसूस किया कि उनकी बॉडी कूल हो गई, उनका माइंड शांत हो गया, यानी वो कामनेस की तरफ बढ़ गई। और हाँ, डीएक्सिन प्रोडक्ट्स और शून्य साथ साथ एक मनुष्य के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और वो हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, वो मानसिक आहार और आपकी नॉर्मल हेल्थ रूटीन के लिए, डेली लाइफस्टाइल के लिए, डाइट के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। आई मीन द नेक्स्ट पिक्चर, द वीडियो। एक और उन्होंने एक लेडी के बारे में अपना एक इंफॉर्मेशन शेयर किया। जो लेडी उनके पास आई और उनसे कहा कि मुझे एक अपने अंदर एक नया चेंज लाना है, मैं अपने पुराने व्यवहार से थक गई हूँ, अपने पुराने बिहेवियर से थक गई हूँ, अब मुझे जिंदगी में कोई चेंज चाहिए। तो उनके साथ भी एक्यूपंक्चर और नीडल थेरेपी का जब प्रैक्टिस हुआ तो वो लेडी को शुरुआत में काफी तकलीफ हुई, ध्यान करने में भी तकलीफ हुई, पर धीरे धीरे एमी ने उन्हें विथ डीएक्सिन सप्लीमेंट्स जब उन्होंने ये प्रैक्टिस चालू किया तो उन्हें बॉडी में कुछ चेंजेस फील हुए। उनको जो फ्रोजन शोल्डर का तकलीफ था, कुछ लोगों को ये यहाँ इंडिया में भी होता है कि वो अपना हाथ नहीं उठा पाते एक एरिया के बाहर, तो वहां पर भी एक्यूपंक्चर और शून्य थेरेपी विथ एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली डेली जब आप ये हर रोज करते हैं तो आप उसमें काफी चेंजेस देख सकते हैं। ये लेडी ने भी वही किया, उनके हस्बैंड और अब वो मिलके अब वहां के लोगों में मार्केटिंग करते हैं डीएक्सिन प्रोडक्ट्स को और शून्य के बारे में लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम वो हमारे एक पुराने स्टेटमेंट में आ जाते हैं जो आमी ने ही शेयर किया था, अगर आप किसी से अगर आपको कनेक्ट करना है इन डीएक्सिन, अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आप लोगों के सॉल्यूशंस आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की और देने की कोशिश करिए। उन्हें ज्ञानोडर्मा से भी इंट्रोड्यूस कराइए, साथ ही साथ उनको शून्य के बारे में भी सिखाइए, बिकॉज आजकल लोग अपने आप से बहुत तंग हो चुके हैं, अपने आप को एक नया बूस्ट, एक नया मोटिवेशन देना चाहते हैं, नया प्रोत्साहन लाना चाहते हैं जिंदगी में। और जब वो खुद को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप का एक पर्पस ढूंढ पाएंगे जिंदगी में, तो ही वो सुख और शांति समृद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। So yeah, Amy, I gave a gist about all that you have shown in the very beautiful slide. Now I'll hand over to Mr. Pradeep sir because he's going to tell us all something about Boulder Valley and also showcase the video. Ji Pradeep. So dia bagi kat Mr. Pradeep jap.
Can we proceed this? Pradeep sir, your mic is on mute. Yeah. Yes, sir. Now we. Well explained, Sami. Your insights are very realistic. You explained about Boulder Valley. So everyone wants to watch what is Boulder Valley exactly is. Not only from India, from different part of the country, world, the people wants to know more about the Boulder Valley. So we are going to show a video for our viewers to know more about Boulder Valley. Okay. Wow. So we also eagerly, waiting for to visit Boulder Valley soon. All right. Yeah, Mr. Pradeep, I have one Yeah. request. If you're okay, maybe we'll Yeah. take like 10 minutes, 5 to 10 minutes video or compilation of team building, corporate team building that we handle here, where Yeah. we successfully integrate with SUNYA practice. All right. That's great. That's great. I think this can give some idea for the SUNYA T, how to promote DXN or our products or our lifestyle Yeah. product. Okay. Yeah. Exactly. Thank So you. thank you so much, Ami, for taking your time for us to, in your busy schedule and sharing with us your valuable knowledge. Would you like to say something about our show? Actually, this is a show, the people are coming in, they are explaining their Shunya experiences and all that. So would you like to say something about our show? Okay, first of all, again, I thank you, Mr. Pradeep, Mr. Fahila, and also uh, the other guy. Okay, thank you so much for inviting me. Even though I have lots of clash, but we managed to do it. And thanks for your patience also. It's really rewarded, right? And then, and I'm in the future, maybe I will share more about the testimony of the Sunya practice and where we also can conduct. Because in my opinion, Sunya Saga is like where we in the different region, we do Sunya on the same time. So we might gather this kind of energy and healing. We can try to do this actually. This is also my dream where we can be in different part of the world, but we unite as well. And it can also make us non-differentiate each other. And then, of course, in the future, if you are okay, we can also collaborate on getting the testimony on the microtherapy and also the nature approach way on marketing and on how to approach people based on my experience and when I followed him as well. A lot of story of him that he didn't share, I will share one based on my observation. And then, of course, the testimony on the Sunya. So we can gather a lot of people. So people have this kind of idea how to collect testimony of this Sunya therapy. Then we can become growing stronger and stronger.
Okay. Right. So, Sure. yeah. Sure, Thank Ami. you. Okay, so can I show the Yeah. video of the team building one? This one, huh? Okay. Can you see it? Exercises now in class house today, this morning. More smile. Yeah. Okay, thank you so much. Yeah. It was. Okay, that's all. Yeah. It For was your nice. information, that video showing one day what happened in Boulder Valley. From the team building,
then other Yep. in-house guests of the foreigner, and then Yeah. also other leaders come here for visit. So that's Yeah. actually in one day, entire day program. Yeah, exactly. So the people know what is Boulder Valley experience. Yep, that's great. Next time. So, yeah, sure. So, thank you for joining with us, ma'am, and definitely we are very happy to bring you here in this show, and definitely we will be bringing you back again in the coming months. Thank you so much, and bring you again in the coming months. Thank you so much. Thank you very much for both of Yep. you and other at the backstage there. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. Yeah. So, and a very special announcement now. Dr. Lim is joining for a chat show on the program called Coffee Ke Saath Ek Charcha on 26th September at 1 p.m. Please make sure to watch the program from the beginning. And finally, we are, special thanks to our viewers for showing us so much love and support, and also our amazing management team, especially Suji sir, PIC of Maharashtra and Gujarat, for encouraging us and supporting us. So take care, stay safe, and keep practicing Shunya, keep consuming DXN products, learning from your experiences. Thank you. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो पे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एमी, आपने इतना कुछ हमारे साथ शेयर किया। आगे आने वाला जो दूसरा शो होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो उसके लिए 26 सितंबर से अपडेट्स आना चालू हो जाएंगी। तो आप प्लीज़ हमारे महाराष्ट्र गुजरात फेसबुक चैनल को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी शो से रिलेटेड आपको सजेशंस देने हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। DXN फैमिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट और आपके प्यार के लिए। तो स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग।